हेलो एस्पिरेंट्स नमस्कार मु सौम्य स्वागत करछि आपनको आपनकर आमर खुशी से चैनल इंस्पिरेशन सौम्य सर तो आज हूँ 2017 OTET पेपर 1 आम समस्त पेडागोजी पोर्सन कवर करिया ठीक अच्छे। तो चलतु काल विलंब करके आम स्टार्ट करदे। ये रहा प्रथम प्रश्न आप सामने which one is not correct कोटा गोटे करेक्ट नो कोटा भूल अच्छे। डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ताले ठीक अच्छे कोटा कुछ भूल पचार नट सब ध्यान देव। डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स पीसफुल ना टेक प्लेस यूनिफॉर्मली सब यूनिफॉर्मली करे कि ना ताले ऑप्शन बी हम भूल है आगू देखिए भी दरकार नहीं बुझीपार। देखो ऑप्शन टू सेकेंड नंबर क्वेश्चन कौन देती which process is motivation मोटिवेशन कोटा को टाइप प्रोसेस मोटिवेशन गोटे मेंटल प्रोसेस हाँ कि नहीं मुंडे आसता है बुझा पड़े मोटिवेशन को टाइप प्रोसेस मेंटल प्रोसेस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड टीचर आस्क टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रेन डाइवर्जेंट थिंकिंग बुझे नहीं कन्वर्जेंट के हेनी है। देखो बढ़िया सजे सजे क्वेश्चन पड़ी which trait is found in a problem child गोटे जो चाइल्ड पाखे प्रोब्लेम अच्छी असुविधा अच्छी पाखे कौ भाई थी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी थी मेंटल अनस्टेबल भी थी लैक ऑफ एडजस्टमेंट ऑल ऑफ थी है ना ऑल ऑफ देखो जोड़ी बाड़े दब ठीक अच्छे। which is associated with डिस्केसिया अच्छा ये कौ टाइप डिस्केसिया गोटे नुआ टाइप वर्ड शुणच डिस्केसिया ताले ये कौन हम यहाँ डिस्केसिया हवा कथा ना डिसलेक्सिया हवा कथा है भूल जाए डिसलेक्सिया है डिसलेक्सिया कौन रीडिंग बुझीपार नहीं यहाँ प्रिंटिंग भूल अच्छे डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सामने 6 नंबर समस्त आंसर करेंगे व्हेन डिड इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम के स्टार्ट होता पचार के स्टार्ट होता 1971 रु 1971 केते 80 है 1971 रु 80 ये टाइम कौन था इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता मन रखिए समस्त ठीक अच्छे के 1971 रु 80। तब देखो इन ए मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएसन द लर्नर केमती था मोटिवेटेड जो था से निज निजे इच्छा करे करने हाँ कि नहीं। तब देखो बिकम इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन निजे निजे क्वेश्चन भी पचारे है ऑप्शन 1 ठीक अच्छे आगे देखा दरकार नहीं व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द एंट्रांस टेस्ट केमती प्लेसमेंट केमती प्लेसमेंट बुझीपार नहीं कहीं तुम गोटे जगह पशिया चाहो ठीक अच्छे ताला प्लेसमेंट देखिए कौन which one is नट देदेला देखो घाटी देला नट देदेला नट जो दूसरे मैंने ध्यान देखिए नट ए फ्री रेस्पन्स ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्री रेस्पन्स मैंने खुला मिला कौन उत्तर देवा कौन चान्स दिया ना ताले कौन से तुम डिस्क्राइब कर ताले को आंसरटा हम देखो कौन देखिए हाउ मेनी क्लासेस कौन गैसेस आर रिलीज्ड बाय द ट्री ड्यूरिंग डे टाइम एटा तो तुम जानिच है किसी एलोबरेट करा बोले कि नट ए टाइप ऑफ फ्री रेस्पन्स यहाँ फ्री रेस्पन्स है ये तो पर्टिकुलर आंसर अच्छे तेल यहाँ हम है जब कहते तुम बापा विषय लिख तुम घर विषय लिख ताल तुम मन इच्छा लिखी था ना कौन फ्री रेस्पन्स बुझीपार क्लीयर। चलो व्हेन डिड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट इन आवर स्टेट आम स्टेट माने ओडिशा है ओडिशा के मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है 2007-8 मन रखिए के 2007-8 स्टार्ट होता अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ आवर कंट्री व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन है डाटाबेस क्वेश्चन पकड़ा लिटरेसी रेट के 2011 जो सेंसस जनगणना होता है ताले वुमेन मानकर कौन लिटरेसी रेट के से टाइम पचार 60.46 देख सब जगह 60 अराउंड हम है कि देख 60.46 60.64 65.46 75.46 कौन हम आंसर यहाँ हम 65.46 कौन हम 65.46 ठीक अच्छे। चलते आगे बुझा which of the following is not related to child center education है चाइल्ड सेंटर टीचिंग सहित कौटे रिलेटेड नुह ताले देख नट पचार सब बेले नट पचार ध्यान दीजिए है एम्फासिस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस एटा तो चाइल्ड सेंटर एम्फासिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एटा भी चाइल्ड सेंटर एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग एटा भी चाइल्ड सेंटर एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग ना एटा है हम नहीं है। तब देखो which one is not an evaluation tool कौटा गोटे इवैल्यूएशन टूल नुहे पचार देख चेकलिस्ट तो गोटे इवैल्यूएशन टूल रेटिंग स्केल भी प्रोग्रेस कार्ड भी होम टैक्स घर को टैक्स गोटे कौन दब नॉट इवैल्यूएशन टूल। तब देख कितना नंबर 14 नंबर देखो देखिए which one is not a step in experiential learning एक्सपीरियंशियल लर्निंग कौटा गोटे कौन स्टेप नुह बोली पचार सेंस द प्रोब्लेम तो हम डिफाइनिंग द प्रोब्लेम ड्रॉइंग द कंक्लूजन ठीक अच्छे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ना नॉलेज कंस्ट्रक्शन ये हुए ना बुझीपार नहीं ताले ऑप्शन 4D हम करेक्ट आंसर। which one is the not a step of मीनिंगफुल लर्निंग कौटा गोटे स्टेप नुह पचार एंगेजमेंट तो हम एक्सप्लेनेशन भी हम इलुस्ट्रेशन भी हम डेमोन्स्ट्रेशन नुहे है मन रखिए।
କ'ଣ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। Which of the following is related to learner center କ'ଣ learners handwriting which one of is related to learners handwriting କ'ଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବିନା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଉପରେ ଯଦି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ହାତ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନି ସେ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାଟା ମିଳିଥାଏ ତାର ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରେସିକ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଜ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ମାନେ ନିଜ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ତାର ପନିସମେଣ୍ଟ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ ପଚାରିଛି ତାର କୁହ ପର୍ପସ୍ ନ ଅଛି ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ନେଚର୍ କ'ଣ ପର୍ପସ୍ଫୁଲ୍ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ କିନ୍ତୁ ଲିମିଟେଡ଼ ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼ କି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ ଜୀବନ ଯାକ ହେବ ହେଲା ବୁଝାପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ମନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହଁ ପଚାରିଛି କହିଲେ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ତାହେଲେ ଶୋଇଂ ଇମ୍ପାର୍ଟିଆଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଇମ୍ପାର୍ଟିଆଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମାନେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ହେଲା। ପ୍ରେଜିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଅଦର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରେ ଇଏ ବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଠିକ୍ କଥା କେଉଁଠି ନୂଆ ପଚାରି ଠିକ୍ ନଟ୍ କମ୍ପେୟାରିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଅଦର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ତୁଳନା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। ନଟ୍ ଗିଭିଂ ଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲ କଥା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଦ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଥ୍ରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାର ହଜାର ଥର ଆସିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ଆଗକୁ କହିଥିଲେ ଗେଟ୍ସ ହେଲା କିଏ କହିଥିଲେ ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା କିଏ କହିଥିଲେ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଥ୍ରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ କିଏ କହିଥିଲେ ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନୁହେଁ କୁହ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ କେଉଁଟା ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଦେଖିଲ ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ କଥା ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଜିନିଷର କେତେ ମାତ୍ରା କଥା ପଚାରିବ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ କଥା ପଚାରିଛି ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଟି କଥା ପଚାରିବ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଙ୍କ ଗ୍ରୋଥଟା ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହୁଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନା ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନା ସୋସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ହେଲା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କାହିଁକିନା ଗ୍ରୋଥଟା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ହଁ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଓକେ। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆସିମିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପିଆଜେଟ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଆସିମିଲେସନ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ କେଉଁଟା ସେଲ୍ଫ କଗ୍ନିସନ୍ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କ'ଣ ଆତ୍ମସଂଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହେବ ସେଲ୍ଫ କଗ୍ନିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ ଏ ସିନ୍ସିୟର୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 30 କେତେ ରହିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ହେଲା ନିଜେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି କରୁଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ which one is refers to cephalocardial development cephalocardial ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା cephalocardial ହେଲା ପ୍ରୋକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ୍ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟରରୁ ପେରିଫେରି ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବ ହେଲା ଆଉ ସେଫାଲୋକାର୍ଡିଆଲ୍ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳକୁ ଆସିବ ହେଲା ହେଡ଼୍ରୁ ଟୋକୁ ଯିବ ସେଣ୍ଟରରୁ ହେଡ଼୍ ଯିବ ନୁହଁ ହେଡ଼୍ରୁ ଟୋ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 26 which method is suitable to identify the gifted learnerକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ମେଥଡ଼ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିହେବ ଟିଚର୍ସ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିହେବ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିହେବ ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ରୁହ which method is suitable to identify gifted learners which method ତାହେଲେ ବେଶୀ ଠିକ୍ ହେବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ବି ଠିକ୍ ହେବ ନା ଏଇଟା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ହେବ ହେଲା କ'ଣ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତାପରେ ଦେଖ 27 ହୁ ହାଜ୍ ଦ ପ୍ରୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିଏ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ବାନ୍ଦୁରା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ବୋବୋଡଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟା ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ନୁହଁ ପଚାରିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ତ ହେବ କଣ୍ଟିଗ୍ୟୁଟି ବି ହେବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ନା ନଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେବନି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ନୁହଁ ପଚାରିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଫର୍ ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଫର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଏଇଟା ତ ହେବ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏଜୁକେଟର୍ ହଁ ଏଇଟା ବି ହେବ ଇଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 20 ଲର୍ଣ୍ଣର ନା ଏଟା ନୁହେଁ
ये ये देले करेक्ट आंसर हम ठीक अच्छे। लास्ट क्वेश्चन रहा व्हिच इज नॉट ए रिकग्निशन ऑफ अ टेस्ट टेस्ट कोड़ा गोटे रिकग्निशन नुहे पचार ताल देख ट्रू और फॉल्स है गोटे गोटे कौ टाइप गोटे रिकग्निशन ऑफ टाइप ऑफ टेस्ट है कोड़ा गोटे कौन अभिज्ञान प्रकार प्रश्न नुहे पचार ताले कोड़ा हम अभिज्ञान टाइप ऑफ प्रश्न पचार देख ये ट्रू फॉल्स नॉट पचार कोटा गोटे नुहे पचार ट्रू फॉल्स तो हम मैचिंग भी हम मल्टीपल चॉइस भी हम ताले सेंटेंस कंप्लीशन ये नुहे है अभिज्ञान प्रकार प्रश्न ये हेनी ठीक अच्छे क्लीयर ताले आज 30टा प्रश्न आप कंप्लीट होगा 2017 आउट ऑफ 30 आप रहा मत कमेंट निश्चय जल्दी ये हूँ आपंकर आम खुशी चैनल इंस्पिरेशन सौम्या सर थैंक यू वेरी मच जय हिंद स्टे सेफ।